सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल जनरल के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और कहा हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में ही थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज़ इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपके होते ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्ली उनके चर्चेज और के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सोल्यूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? कितने सर और मंदिर चलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे जलाएंगे तो हुकूमत को एक्चुअल सर सोल्यूशन की तरफ आएगी? शुक्रिया। Your vision for Pakistan, which this session was supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? I'm joining. So, sir, amidst the declining economic growth, increasing debt, political instability and whatnot, I am genuinely curious that why did you feel the need to come to Lums and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I don't get humiliated by I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to Lums? I want to know. Thanks. That if a state gives rights to its citizens, then there should be some responsibilities. And I'm sure we all agree we don't want the outcome which you just described in Iraq or Iran, sorry. But I feel like all of us over here do not want the outcome that we're currently seeing in Pakistan. That is when the penalties are not proportionate to the crime committed, even if calling that a crime is just going against rules and regulations. Like, for instance, you're referring to 9th May? And the outcomes of it. Be open. Why are you hesitant? So, first of all, my question is, why has the state or the political leadership, especially of KP and Balochistan, not been able to have this single unified policy against all sorts of terrorism? So, and what's the solution? How do we avoid this kind of dilemma that we are in? My question stems from the previous question, which was on the election date. But when you look at the election process, what measures would you as a caretaker government be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat-e-Islami collectively, they won a majority. But I don't know what happened. सारे 9 मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन PTI वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक PP का ही चेयर बना था. PP का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था. I see this happening on a larger scale as well. And yeah, you as a caretaker government, I think, can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. Thank you so much, sir. First of all, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था सर, जब आप इलेक्ट हुए थे ना एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है, सिलेक्ट हुए थे. अच्छा, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था.
चलो तो बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलोचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे. लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुछ लाख से किला सैफला था कि डबल रोड बन रहा था वो भी रुक गया है सर. और दूसरा ये जो अफगान रिफ्यूजीज़ का मसला आ गया है सर. आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर. सर क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिजनेस है सारा, वो अफगान रेफ्यूजीज़ रन करते हैं. तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जो स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी. तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, या कोई आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हों चाहे वो केपी से हैं, आपने उनको भी जो है ना लिया होगा. एक वो जो पीएम की एक स्पेसिफिक काबीना होती है, वो सबसे इलीट और टॉप लेवल वाले वो डिसीजन लेते हैं सर. तो माय क्वेश्चन टू यू दैट कि आपने इस मसले को कैसे अप्रोच किया. Is that recently we've seen a lot of religious sentiments and religious rhetoric being used by politicians, not only to entice voters but also to kind of attack another political party. So considering we already have a considerable amount of restrictions on the kind of discourse that we can engage in, should this not also be a restricted part of discourse, considering that yes, we are an Islamic nation, but there are a lot of other religions in the country, and also religion is considered to be a very sensitive topic. It should not be weaponized and politicized as it is now. Sir, I absolutely agree. There needs to be, a documentation of all the citizens of Pakistan, and we obviously cannot proceed without having Nadra cards, without having CNICs, all of that. They also cannot then access the healthcare system and other provisions. I completely agree with you there. What we saw this morning was people being loaded into cargo trucks, and I don't know if you would want to deny the Dawn news report as completely false, in which circumstance this conversation would not be happening. But 2 people have died in the legal process of deportation that is happening. जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में. तो फिर डर किस चीज का?